Very good evening to all the participants. So today we'll start with section 121 onwards. Up to insolvency, we have covered. So let us cover this bankruptcy also, and then we'll do the case studies on this fresh start, individual insolvency and bankruptcy. I have already shared the material with you, so you can attempt the case studies on your own also. Section 121, application for bankruptcy. So which are the sections? Section 100. So in section 100, section 100 you have already read. In section 100, who can file the application? Whether creditor, debtor or both? Creditor only. Only creditor can file the application under section 100 because in case the RP feels that the application has been made to defraud the creditor. So in that case, the creditor can initiate the application under section 100. Now, what is this section 115? So section 115 means the repayment plan. Effect of approval of repayment plan. Yes. So it is talking of effect of order of adjudicating authority on repayment plan. It is binding on the creditors. It is binding on the Basically, debtor. it is on rejection of the repayment plan. So Yeah. it is talking of rejection. Rejection. 118 is talking that repayment plan was approved, but it is ending prematurely. Leakage. That means all the payments could not be made. So in all these cases, the application for bankruptcy can be initiated. And who can initiate this application? Creditor or debtor. Creditor or debtor, or jointly with other creditors. Take it. Yes. Now, suppose the insolvency application was filed for 70 lakhs, but now he paid 50 lakhs. So in now the application will be filed for how much amount? 20 lakhs only. 20 lakhs only, for the unsatisfied portion only. So these are the three sections. Section 100, application by creditor in case of fraudulent initiation by the debtor. Section 115, rejection of repayment plan. Section 118, when repayment plan comes to an end prematurely. So these are the three sections. An application for bankruptcy shall be filed within a period of 3 months of the date of the order passed by the adjudicating authority under the sections referred to in subsection 1. So this 3-month period is the maximum or minimum period? Maximum. 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 So why they have given this period of 3 months? Why not immediately? Any idea? To give some scope for repayments. And all. Yes, to give some scope for repayment, and actually bankruptcy is a kind of blot. So naturally at this stage also, the person who is going to be judged as bankrupt, he will try to make the payment and get out of this mess. So that is why they have given this period of 3 months. Now where the debtor is a firm, the application under subsection 1 may be filed by any of its partners. So this is different. In case of insolvency, whether a single partner can file the application for insolvency? No, jointly or by majority. No. Yes, but here it is any of its partners. Where the debtor is a firm, the application under subsection 1 may be filed by any of its partners. So here there is difference. That is why I have highlighted this. Section 121. Now section 122, application by debtor. So when the debtor filed the application, what are the documents he will enclose? The application for bankruptcy by the debtor shall be accompanied by the records of insolvency resolution process undertaken under chapter 3 of part 3, the statement of affairs of the debtor in such form and manner as may be prescribed on the date of the application for bankruptcy, and a copy of the order passed by the adjudicating authority under chapter 3 of part 3 permitting the debtor to apply for bankruptcy. Now, when you are reading this section, what are the other things you require to have a wholesome understanding? So you require, besides the provisions of this code, the regulations and rules.
So whether rules and regulations have been notified for personal Yes. guarantors to corporate debtor? Yes, sir. Yes. Yes. So they have already been notified. So it says statement of affairs in such manner as may be prescribed. So let us have a look at the rules. So these are the rules. So in this rule, let us see. मेरी एक्चुअली मीटिंग चल रही है, 9:30 के बाद बात करते हैं ना. So we are at these rules. Application by guarantor. So it is referring to section 122. I hope my screen is visible now. Yes, sir. हाँ, ये रूल नंबर 6 क्या बोलता है? The application under subsection 1 of section 122 shall be submitted in form A along with an application fees of 2000 rupees. ठीक है. The guarantor shall forthwith serve forth with a copy of the application referred to in sub-rule 1 to every creditor and the corporate debtor for whom the guarantor is a personal guarantor. Sir, one clarification, sir. Yes, please. Actually, in the same 6, the Mhm. guarantor shall serve forth with a copy of the application referred to in sub-rule 1 Mm-hmm. to every creditor. Mm-hmm. But whereas in insolvency resolution, they has written every financial creditor. What In would be the insolvency logic, rule. sir? It is just like insolvency and liquidation like that. If you go to rule 6, same rule 6 of insolvency, Insolvency, okay. yeah, he said every financial creditor, he is not using the every creditor. Just a minute. Yes, actually, I think there is some mistake here. It should be to every creditor. No, sir. No, sir. No, sir. Brahma- There may be a logic is, to my mind, the logic is they might be aware, the creditor might be aware about the other creditors because that's corporate proceeding, they know where the guarantees are given, but they do not know about where from where they have additional borrowings. So maybe the personal borrowing or the things they might not be aware at that stage. But at the Acha, stage acha. of at the stage of insolvency proceeding, they know about each and every creditor who is on the record. No, these are the rules I am reading from this insolvency rules only. So insolvency rules say financial No, sir. creditor. And Correct, bankruptcy rule says every creditor. The So logic might be the list is clear now. In bankruptcy rule stage, correct. the Correct, list of creditors is available. correct, sir. Correct. It might be. Yeah, so the logic might be. Okay. That too, this will be filed only by the personal guarantor to the corporate debtor. Pardon? This application will be filed by the personal guarantor of the corporate debtor first instance. Then the moment it is comes into the the insolvency, anyway public notice will be given, claims will be received. Yes. Then they yes, will finalize the list No, of but creditors. claims are received during insolvency also. It's not that claims are not being received during insolvency. So the filing of at the time of filing of application in insolvency, the list is not crystallized. I, as a banker, doesn't know from he what are the other unsecured creditors are. Yes, that could be the logic. That could be the logic. Yeah. But the other question will be here whether operational creditor cannot file an application. It's not so. Even operational creditor can file the application against the guarantor. Sir, logically, operational creditor can file the application only when the personal guarantor has given guarantee to this operational creditor. Then only it will be possible, sir. Yes, Filed. yes. So it could be the case. Yeah, that could be the case. Okay. So now we were at these rules. So in rules, we want to find out the prescribed particular statement of financial position. What it says, the statement of financial position referred to in subsection 2 of section 129. But we are not talking of 129. We are talking of the statement of affairs of 129. 122. 122. So let us see whether there is any such form.
Application by guarantor to initiate. Particulars of debt. Attachments. These are the attachments. Form B is application by creditor to initiate bankruptcy process. Probably Form E might be, sir. Form Under C is Rule public 11. notice. Just a minute. Form D is notice to creditor. Yeah, actually, it is. Form E is statement of financial position of bankrupt. Maybe he is referring Rule 11 actually. But here he is saying statement of affairs. That is under section 129. Will it be there in regulations, sir? No, prescribed means it will be in rules only. Yes. Rules, okay. Mhm. So that are in such form as. Form A is written consent. Then form B is form to No, appoint. they might be referring to Rule 6 only, sir. Application by guarantor. Fees of bankruptcy trustee, mode of sale, etc. Anyway. So they are saying Rule 6 and 16, basically. So Rule 66 and 16, let us see what Rule 6 says and what Rule 16 says. Rule 6 is talking of application by guarantor. And then Rule 16. Rule 16 says filing of application and documents. Okay. So the point here is whether the statement of affairs and the statement of financial position is one and the same thing or different. That is the point basically. But it says prescribed. So the only thing prescribed is the statement of financial position. A copy of the order passed by the adjudicating authority under chapter 3. So see, these are the things which are to be attached. Just now 120. The debtor may propose an insolvency professional. The word used is may. So it's not shall, it is may. The debtor may propose an insolvency professional as the bankruptcy trustee in the application for bankruptcy. And the application referred to in subsection 1 shall be in such form and manner and accompanied by such fees as may be prescribed. So fees we have already seen, it is 2,000 rupees only. And this application is in form A. Now, an application for bankruptcy by the debtor shall not be withdrawn without the leave of the adjudicating authority. So, but in case of insolvency, we have seen that there is a provision that if 90% of the creditors agree, so then application can be withdrawn. But here it is not without the leave of the adjudicating authority. Section 123. Section 123 talks of application by creditor. The application for bankruptcy by the creditor shall be accompanied by the records of insolvency resolution process undertaken, a copy of the order passed by the adjudicating authority permitting the creditor to apply for bankruptcy, details of the debts owed by the debtor to the creditor as on the date of the application for bankruptcy, such other information as may be prescribed. Now, an application under subsection 1 made in respect of a debt which is secured. So if the debt is secured, it shall be accompanied with a statement by the creditor having the right to enforce the security, that he shall, in the event of a bankruptcy order being made, keep his security for the benefit of all the creditors of the bankrupt. Or, so these are the two things. Either he will relinquish
or he will say, दीपा जी म्यूट कर लीजिए अपने को प्लीज. Or the statement by the creditor stating that the application for bankruptcy is only in respect of the unsecured part of the debt and an estimated value of the unsecured part of the debt. Okay. If a creditor makes an application for bankruptcy and submits a statement under clause B, the secured and unsecured shall be treated as separate debts. Same as 110. Yes. So in case of this application by creditor, what is the form number? Form B, Form B. Form B and fees is 2000 rupees. 2000. And the creditor shall serve the copy to the guarantor and the corporate debtor, for whom the guarantor is a personal guarantor. In case of a joint application, the creditors may nominate one amongst them to act on behalf of all the creditors. So it is given in rules. So if we see rule number 7, these are the rules. So if we see rule number 7, so it says application by creditor, form B, 2000 rupees, copy to the guarantor and the corporate debtor. And in case of joint application, the creditors may nominate one amongst themselves to act on behalf of all the creditors. The creditor may propose. So in both the cases, the debtor or the creditor, they may propose, they may not. That means they can file the application themselves also. The word used is may, not shall. An application for bankruptcy under subsection 1, in case of a deceased debtor, may be filed against his legal representatives. Acha, yesterday you have asked this question, sir, I think. Yes, I was Yes. asking in relation to insolvency. But there it cannot be possible. Here it can be possible. But it is saying may be filed against. So it is not saying by. It is saying against. Correct, correct. So that means if creditors want to recover, they can. This The point word is is- not there in IRP, no, sir? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? This point is not there in the insolvency part, no? Yes. हाँ. The application for bankruptcy shall be in such form and manner and accompanied by such fees as may be prescribed. So it is rule number 7. So rule number 7 we have already seen. Rule number 7 and 16. An application for bankruptcy by the creditor shall not be withdrawn without the permission of the adjudicating authority. So it says an application for bankruptcy by the creditor shall not be withdrawn. Now whether the debtor can withdraw? No. Same, No, same logic. same provisions. 122. Two. So whether it is debtor or creditor, they cannot withdraw without the permission of the adjudicating authority. Now effect of application. Where an application is filed under section 122 or 123, an interim moratorium shall commence. So it is same like case of fresh start or insolvency. Interim moratorium and then moratorium. During the moratorium, any pending legal action or legal proceeding against any property of the debtor in respect of his debts shall be deemed to have been stayed. The creditor of the debtor shall not be entitled to initiate any legal action or proceedings against any property of the debtor in respect of any of his debts. Where the application has been made in relation to a firm, the interim moratorium shall operate against all the partners of the firm as on the date of making of the application. So same provisions. The provisions of this section shall not apply to such transactions as may be notified. So here the question arises whether the secured creditor can enforce his security during No. bankruptcy. No, sir. No. Any of the debts. Now actually if we read section 122, so section 122, 123 if we read 123.2, 123.2 says what? It says a statement by the creditor having the right to enforce the security that he shall, in the event of a bankruptcy order being made, bankruptcy order being made, that means the application being admitted, give up his security. So it is the option for the creditor who is a secured creditor. He may give up this option. He may give up his security for the benefit of all the creditors, or he may say that this application for bankruptcy is only in respect of the
unsecured. Unsecured. Sir, this provision is similar to section 110 insolvency actually. So during that time, a moratorium is actually going on, no? Rights of No, secured. actually it is saying in the event of a bankruptcy order being made. That means during interim moratorium, he will not be able to enforce, but after the bankruptcy petition has been admitted, so in that case, he can enforce his security. So same like in insolvency actually. So 124, this we have already seen. The provisions of this section, and in insolvency, what is the section? Sneh Rupta ji? In case of insolvency, what is the section due for interim moratorium? 90, 96, sir. 96. 96 years. Interim moratorium. No, that is there, but he is not talking of secured and unsecured here. Sir, they're talking is 122, sir. Not 122, 110, sir. Okay. So 110 years. So he may or may not participate, right? He may or may not participate in this repayment plan. Yes. So this is in contrast to that moratorium where they are saying any of the debts, no? Here the secured creditors are Yes, still the secured creditor is on a different footing, na? Because you have already mortgaged the property to him, or you have already given him the security. No, sir, but we were making a point, no? Any of the debts, we were stressing on that any of the debts means secured. No. During interim moratorium, he will not be able to do anything. But section 110 says in relation to repayment plan. Section. Sir, even in moratorium, it is any of the debts, no? No, that is there, but section 110 specifically talks about Yes. the rights of the secured creditor. So Yes. these rights are in relation to the repayment plan only. So he may vote, he may not vote on the repayment plan. But here also, they are not talking, in section 110, they are not talking of enforcing the security. So what are the options available? The right to vote exercise in section 110 says, where a secured creditor does not forfeit his right to enforce the security, he shall submit an affidavit to the resolution professional at the meeting stating that the right to vote exercised by the secured creditor Same is point as bankruptcy, sir. unsecured. This entire section, subsection Same, 3 is yes. the same as this thing. Bankruptcy 123 actually. No, that Almost is similar. there. But my point is actually here, first question will be whether during insolvency, the secured creditor can enforce the security. The answer is no. During insolvency, he will not be able to enforce his security. He can only opt for voting on the unsecured part. So he may vote on the secured part. He may not vote on the secured part. It is his. So this is only for the voting part actually. Yes. It is saying now it is in relation to a specific thing, in relation to repayment plan. But if we see 122, so 122 doesn't talk of any such thing. 123 rather. 3. You know? So 123, it is not saying anything. It is saying right to enforce the security. And that is talking of when the application is admitted, basically. 123, we see, it is talking of a situation when an application is admitted. In the event of a bankruptcy order being made. So this is important here. 123(2). In the event of a bankruptcy order being made. That means if a bankruptcy petition is admitted, it is same as in case of CIRP. Because in CIRP also, he cannot enforce his security during CIRP. But during liquidation, once a liquidation order is made, so section 133 makes it subject to section 52. So similar is the situation here. 33(5) if we see, I think. So 33(5) talks of section 52, subject to section 52. So same is the situation here. So another question, whether during interim moratorium, the secured creditor will be able to enforce? The answer is no. No. Only in the event of bankruptcy order, it is his choice. And at the application itself, at the stage of application itself, he will make it clear.
Because application may be made by secured creditor, application may be made by unsecured creditor. So if this application for bankruptcy is being made by the secured creditor, he will make it clear at the time of application itself. It shall be actually- accompanied by a statement. Sir, actually, he has an option that he will give up his security, Yes, yes, or then he can only act, enforce his not enforce, he will participate for his unsecured debt. yes, 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 But he cannot enforce right now itself. yes. Now it is clearly saying, in the event of a bankruptcy order being made. So what is this bankruptcy order being made? That means application being admitted. So once an application is admitted for Okay, it is bankruptcy, just like he is 33 free. and 52. Right. Okay, right. So 124 is clear now. Now 125, appointment of insolvency professional. So it is because the debtor or creditor may or may not give the name of the bankruptcy trustee. Taken. Hmm. So if the name is proposed, then disciplinary proceedings will be ensured. And if the name is not proposed, then what the adjudicating authority will ask within 7 Direct days, the the board board. will confirm within 10 days. Same regulations. Bankruptcy order. The adjudicating authority shall pass a bankruptcy order within 14 days of receiving the confirmation or nomination of the bankruptcy trustee under section 125. So that means the adjudicating authority shall not pass an order unless confirmation or nomination of the bankruptcy trustee is made. Appoint. Because the admission order itself will contain the name of the bankruptcy trustee. So if they ask you whether bankruptcy trustee can be appointed by the adjudicating authority after the admission, no, it has to be simultaneous. The adjudicating authority shall provide the following documents to bankrupt, creditors and the bankruptcy trustee within 7 days of passing of the bankruptcy order, namely a copy of the application for bankruptcy and a copy of the bankruptcy order. Okay. Now rule 14 is talking of this, a copy of the bankruptcy order. Rule 14, if we see, Rule 40 says, on the appointment of the bankruptcy trustee nominated by the board, the adjudicating authority, a copy of the application as referred to in Rule 6 or 7, if not provided earlier, shall be provided to such bankruptcy trustee by the adjudicating authority within 3 days of the appointment. Suppose his name was given, then the copy must have been given to him already. But if he was appointed by the adjudicating authority, then the copy will be provided to him within 3 days of the appointment. Now, validity of the bankruptcy order. The bankruptcy order passed by the adjudicating authority under section 126 shall continue to have effect till the debtor is discharged under section 138. Now, in insolvency, what is the period? Period is 180 days. 180 days. But in bankruptcy, what is the period? Is there till any? That the is till the 138. discharge. 1 year, I think. Somewhere I've read 1 year. So 1 year somewhere, I think it's mentioned. Okay, we will see where this is given. It's in section 138. 138, okay. So 138, what it says? Expiry of 1 year On from the expiry of bankruptcy 1 year. commencement, Okay, okay. or within 7 days of approval of the committee of creditors. Because it may be Completion of expiry. earlier also. 1 So year. maximum is 1 year. 180 days. 1 year, sorry. 1 year. 1 year. And is there any provision for extension? No. There is no such provision. है ना? Insolvency में भी नहीं है. जी. Now validity, it shall continue till the debtor is discharged. Now 128, effect of the bankruptcy order. On the passing of the bankruptcy order under section 126, the estate of the bankrupt shall vest in the bankruptcy trustee as provided in section 154. So this estate of the bankrupt shall vest in the bankruptcy trustee. But please note that during insolvency, the custody and control lies with whom? RP. Custody and control. Custody control with the Debtor, guarantor. personal grantor. Personal वहाँ grantor. there is no question of custody and control during insolvency. Yeah. It's In remain with the grantor. individual It will be with insolvency, guarantor only. it is with guarantor only.
वहां कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कस्टडी एंड कंट्रोल, Right. ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो भी एस्टेट है दैट शैल वेस्ट इन दी बैंक्रप्सी ट्रस्टी। But in insolvency, there is a provision in the repayment plan whether the business of the guarantor can be how it Yes. can be monitored. Yeah. The Yes, provision is there. yes, there is that is he can supervise naturally, Supervise. or he can carry it on behalf of the debtor. Of That the debtor, yes. the estate of the bankrupt shall be divided amongst his creditors, subject to provisions of subsection 2. A creditor of the bankrupt indebted in respect of any debt claimed as a bankruptcy debt shall not initiate any action against the property of the bankrupt in respect of such debt, or commence any suit or other legal proceeding except with the leave of the adjudicating authority and on such terms as the adjudicating authority may impose. So now the bankruptcy has been admitted. Bankruptcy petition has been admitted. So what it says? It says subject to the provisions of subsection 2. A creditor of the bankrupt indebted in respect of any debt claimed as a bankruptcy debt shall not initiate any action because he has filed his claim as a creditor. So he shall not initiate any action against the property of the bankrupt. He shall not commence any suit or other legal proceeding except with the leave of the adjudicating authority. Sir, IRP and bankruptcy, there's nothing like qualifying debt concept, no? Excluded debt, and those things come in this also. No, there is a concept of here because Excluded. Yeah. those excluded assets are there. Excluded, you cannot touch the excluded assets. Excluded. Yeah. Subject to the provisions of section 123. And you cannot discharge the adjudicating authority even if it issues a discharge order. You will not be discharged from the excluded debts. ठीक है ना? देखो दो बातें, you cannot touch the excluded assets and the discharge order cannot be issued in respect of the excluded debt. बस वो separate. Yes. क्योंकि उस पर तो देखो कोर्ट ने पहले ऑर्डर दे दिया है ना। वो बेसिकली क्या है, एक्सक्लूडेड डेट आप समझिए। एक्सक्लूडेड डेट क्या है, उसने ऑर्डर ऑलरेडी दे चुका है कोर्ट उसके बारे में। ये क्या हो रहा है, एडमिट क्यों नहीं हो रही? नाउ सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 123। अब 123 में क्या बोला था? 123 वाज टॉकिंग ऑफ द राइट्स ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो यहाँ पर वही बात आ गई। आप बैंक्रप्सी को समझिए लिक्विडेशन जैसा। लिक्विडेशन में क्या बोलते हैं? सेक्शन 33 सब सेक्शन 5 आता है। सेक्शन 33 सब सेक्शन 5 क्या बोलता है? सब्जेक्ट टू सेक्शन 52। यहाँ पर भी क्या बोल दिया? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 123। 123 में बता दिया कि क्रेडिटर हैज मेड इट at clear at the time of the application itself that in case bankruptcy order is made, what he will do. ठीक है ना? The bankruptcy order shall not affect the rights of any secured creditor to realize or otherwise deal with the security in the same manner as he would have been entitled if the bankruptcy order had not been passed. Correct. ठीक है? Provided that no secured creditor shall be entitled to any interest in respect of his debt after the bankruptcy commencement date if he does not take any action to realize his security within 30 days from the said date. ठीक है? तो he shall not be entitled to any interest in respect of his debt after the bankruptcy commencement date. So he has to take action. He has to realize the security within 30 days from the said date. Sir, what is this interest, sir? Security interest or any interest payment? No, interest payment. Interest in respect of his debt. Okay. So it is interest on the debt. So Achha, his interest debt will interest freeze up to the bankruptcy commencement date only. That is the meaning. Where a bankruptcy order under section 126 has been passed against a firm, the order shall operate as if it were a bankruptcy order made against each of the individuals who on the date of the order is a partner in the firm. Take it. The provisions of subsection 1 shall not apply to such transactions as may be notified. Now, statement of financial position. Section 129. It says, where a bankruptcy order is passed on the application for bankruptcy by a creditor under section 123, the bankrupt shall submit his statement of financial position to the bankruptcy trustee within 7 days from the bankruptcy commencement date. So it is talking of a situation 123, and 123 is application by creditor. Because in case of application by debtor, he has already submitted this statement. In case application is being made by the debtor, he has already submitted the statement of affairs.
of the debtor. But in case the application is made by the creditor, so naturally there is no statement of financial position. So here the debtor has to give the statement of financial position, basically. The bankrupt, the word used is bankrupt. Statement of financial position shall be submitted in such form and manner as may be prescribed. So rule 11 is there. And rule 11, if we see, rule 11 is talking of. Acha, here he is saying, sir, Form E. Form E, yes. Acha, Actually, debtor has been given an option because at the time of filing of application, so they are talking of the statement of affairs, basically. And here they are talking of statement of financial position. The wording also used is different. Statement of financial position shall be submitted in such form and manner. So it is Form E. Where the bankrupt is a firm, its partners, as on the date of the order, shall submit a joint statement of financial position of the firm, and each partner of the firm shall submit a statement of his financial position. The bankruptcy trust. Now, whether there is similar requirement in case of an application by debtor, suppose debtor is a partnership firm. So then, whether this requirement is there, let us see. Let us see 122. So what 122 says? If we see 122, which is application by debtor, they are talking of a prescribed form, but nothing is there in the rules actually. Yes, sir. So you can take guidance from that Form E only. Okay. Yeah. But they are not talking of this firm as a debtor. firm वाला. तो आपको वहीं से गाइडेंस लेना पड़ेगा 129 से ही. The bankruptcy trustee may require the bankrupt or any other person to submit in writing further information explaining or modifying any matter contained in the statement of financial position. ठीक है. तो यहाँ पर वो मांग लेगा ना, bankruptcy trustee मांग लेगा अगर कुछ उसको चाहिए होगा तो. Now public notice inviting claims from creditors. 130. The adjudicating authority shall send notices within 10 days of the bankruptcy commencement date to the creditors mentioned in the statement of affairs submitted by the bankrupt under section 129 or the application for bankruptcy submitted by the bankrupt under section 122. ठीक है. तो 122 में तो क्या होगा, 122 में तो उसने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लगा ही दिया, उसी में लिस्ट आ गई है ना. और यहाँ पर 129 में क्या हो गया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आ गया इसके पास. इशू ए पब्लिक नोटिस इनवाइटिंग क्लेम्स फ्रॉम द क्रेडिटर्स. कितना है, विद इन 10 days ऑफ द बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट. अच्छा, इंसॉल्वेंसी में क्या प्रोविजन है? 7 है. इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी में 7 days. हाँ, तो यहाँ पर आ गया आपका 10 days. But there is no form given in insolvency, public announcement. Form C is there, I think, sir. No. इंसॉल्वेंसी वाला सेक्शन कौन सा है इसका? इंसॉल्वेंसी का अगर हम रूल देखते B हैं है ना, तो regulations में है सेक्शन B, 102 है ना, no, सेक्शन 102 Form B. of public notice, and it is again referring to, it is to be published in one English and one vernacular newspaper. ऐसा बोला है ना इसने. बस इतना ही, इतने हाँ, there is no form. हाँ, ठीक है. There are two things only, form A, Form B is there, and sir. C. Rule 9. Hmm? Rule 9. Form is there. Rule 9. Rule 9 of these rules. इंसॉल्वेंसी, Yeah. इंसॉल्वेंसी में क्या बोल रहा तो है? इंसॉल्वेंसी में Bankruptcy, regulations में bankruptcy है नहीं, rules. form. इंसॉल्वेंसी में तो कॉपी ऑफ एप्लीकेशन है ना. सर इंसॉल्वेंसी में regulations में है फॉर्म, क्लेम फॉर्म है एक्चुअली. ओके. The claim form are there, public announcement I am talking about. Public announcement. Rule 9 is there, sir. Form C. पब्लिक अनाउंसमेंट में नहीं है इंसॉल्वेंसी में कोई फॉर्म. नहीं, रूल 9 तो नहीं मैं है. देख रहा हूँ, रूल 9 तो कुछ और ही कह रहा है. कुछ और कह रहा है सर, नहीं है. रूल 9 तो अलग है. रूल नहीं 9 है. देखो, ये रूल 9 आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा. Public notice. There are three forms only, form A, B and C. C is for proxy. Yes.
हाँ regulations भाई, में तीन फॉर्म में forms। एप्लीकेशन बाय गारंटर आ गया, है ना? या फॉर्म इज रूल्स और एप्लीकेशन। रेगुलेशंस दोनों में तीन तीन फॉर्म्स ही हैं, उसमें पब्लिक ये फॉर्म अनाउंसमेंट ऑफ डिमांड नोटिस आ गया फॉर्म बी में, अच्छा, और फॉर्म इंसॉल्वेंसी सी में में आ गया पब्लिक नोटिस एप्लीकेशन इज बाय नॉट देयर। क्रेडिटर। ओके ओके। कोई बात नहीं, वो तो पब्लिक नोटिस की बात कर रहा है वहां पर, तो पेपर में वो कहीं कहीं से भी फॉर्म ले लेगा, क्या दिक्कत? वो नॉर्मल फॉर्म में कर लेगा, कोई जरूरी नहीं दिया तो नहीं दिया। No, sir, that is fine, but only for the purpose of हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, if they ask whether anybody ask if they ask any right, question in the बिल्कुल exam. बिल्कुल नो ठीक है, फॉर्म इन बिल्कुल सही, इंसॉल्वेंसी। बिल्कुल सही है। Mhm. So it says the public notice under clause B of subsection 1 shall include the last date up to which the claims shall be submitted and such other matters and details as may be prescribed। ठीक है, तो यहां पर ये बैंक्रप्सी का है, तो बैंक्रप्सी में आपका रूल 9 है, इंसॉल्वेंसी में रूल 9 कुछ और है ना? पब्लिश्ड इन लीडिंग न्यूज़पेपर्स, one in English and another in vernacular, having sufficient circulation where the bankrupt resides, affixed on the premises of the adjudicating authority and placed on the website of the adjudicating authority। The notice to the credit, यहां पर देखो वेबसाइट ऑफ द डेटर नहीं है ना? वेबसाइट किसकी है? एडजुडिकेटिंग। एडजुडिकेटिंग। You did it. The notice to the creditors referred to under clause A of subsection 1 shall include such matters and details as may be prescribed। ठीक है, तो इसके अंदर आपका रूल 10 है, 130 में रूल 10 आपका आ गया, और पब्लिक नोटिस यहां पर है फॉर्म सी के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं 131। 131 इज टॉकिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लेम्स। द क्रेडिटर शेल रजिस्टर। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी में भी वर्ड रजिस्टर था मेरे हिसाब से, है ना? और यहाँ पर भी रजिस्टर, जबकि सीआईआरपी में ये वर्ड, सीआईआरपी में कुछ और ही वर्ड है, क्लेम या लॉज या फाइल। द क्रेडिटर शेल रजिस्टर क्लेम्स विद द बैंक्रप्सी ट्रस्टी विद इन 7 days ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द पब्लिक नोटिस। इंसॉल्वेंसी में कितना पीरियड है? 21 डेज। हाँ, तो वहां पर 21 ज्यादा 21 days दिया है, यहाँ पर दे दिया विद इन 7 days of the publication of the public notice by sending details of the claims to the bankruptcy trustee in such manner as may be prescribed। तो इसके लिए आपके पास रूल 12 आ रहा है, और रूल 12 इसके लिए क्लेम जो है, क्लेम फॉर्म है आपका एफ, क्लेम एफ फॉर्म है आपका रूल 12 में। अगर आप जाएंगे तो आपका क्लेम फॉर्म 12 है। द क्रेडिटर इन addition to the details of his claims shall provide such other information and in such manner as may be prescribed। ठीक है, now 132, 132 is talking, अब आप कहोगे ये जो प्रेस्क्राइब्ड है ये कौन सा है? तो इसके लिए रेगुलेशन है आपके, ये रूल्स हैं 14 to 20। ये 14 to 20 ये वही रूल्स, ये मैं दिखा देता हूं आपको, ये 14 to 20 रूल्स बेसिकली क्या है? ये बैंक्रप्सी के है ना? हाँ, बैंक्रप्सी, बैंक्रप्सी प्रोसेस फॉर पर्सनल गारंटर्स 14, 15, 16, 17। ये क्या चक्कर है इसमें? ये है कौन से, देख लेता हूँ। हाँ, एप्लीकेशन, these are bankruptcy rules only, sir. ये बैंक्रप्सी रूल्स, तो इसमें ये वाले रूल्स कहाँ पे चले गए फिर? ये आपके रेगुलेशंस में है एक्चुअली, ये रेगुलेशंस में, रूल्स नहीं, रेगुलेशन। Regulation. हाँ, रेगुलेशन है, वो गलती लिख दिया, ये है रेगुलेशन। तो रेगुलेशन आपका 14 to 18 आप देखोगे ना, तो यहाँ मिलेगा वो, ये है। हाँ फ्यूचर क्लेम्स हाँ, नेगोशिएबल। ये क्लेम्स की बात कर रहा था, बेसिकली फ्यूचर क्लेम्स है, ठीक है ना? तो अगर फ्यूचर क्लेम्स है तो जो वो आपको बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट तक देखने हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में आपको सर्टिफाइड कॉपी देनी है। पीरियोडिकल पेमेंट्स हैं, तो जो भी आपके अप टू दी बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट है वो सिंपल है, जो बाकी में भी सब ऐसा ही है। डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम ऑफ क्लेम, ठीक है ना? तो रिजनेबल एस्टिमेट हो जाएगा। डेट इन फॉरेन करेंसी, ऑफिशियल एक्सचेंज रेट, ट्रांसफर ऑफ डेट, वो डिटेल्स एंड आइडेंटिटी ऑफ द असाइनी और ट्रांसफरिंग, ठीक है? तो वो सब चीजें, ये रूल जो है ना, ये रूल गलत लिख दिया, रूल के बजाय ये रेगुलेशन है। Regulation. हाँ, ठीक है, ये तो पीडीएफ है, मैं वहाँ चेंज कर दूंगा उसमें, जो ओरिजिनल फाइल है ना।
इसको रेगुलेशन कर दीजिएगा, यू प्लीज रीड दिस एज रेगुलेशन. Now 132 is talking of the preparation of list of creditors. The bankruptcy trustee shall within 14 days from the bankruptcy commencement date prepare a list of creditors of the bankrupt on the basis of. अब 14 दिन के अंदर इसको क्या करना है, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बनानी है. वहां कितना दिन था 30 days. इंसॉल्वेंसी? 9 days था, 9 days. 9 डेज का पीरियड था उसके पास. 9 days, 9 days. हाँ, टोटल 30 डेज था क्योंकि 7 डेज में Yes. पब्लिक अनाउंसमेंट थी, है ना. फिर उसको 21 डेज में आपको क्लेम्स इनवाइट करने थे, है ना. हाँ जी, 9 days. हाँ, 9 days. तो अब यहाँ पर जो है ये हो गया लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड बाय द बैंकरप्ट इन द एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी फाइल्ड बाय द बैंकरप्ट अंडर सेक्शन 118 एंड द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फाइल्ड अंडर सेक्शन 125. ठीक है. एंड क्लेम्स रिसीव्ड बाय द बैंक्रप्सी ट्रस्टी अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 130. नाउ समनिंग ऑफ द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स. ठीक है. अब यहां पर देखो कि उसमें तो क्या था, उसमें ये था कि आपको इंडिकेट करना है, आरपी को देखना है, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है उसको देखना है कि मीटिंग कॉल करनी है या नहीं करनी. नहीं करनी. ठीक है ना. इंसॉल्वेंसी में ऐसा प्रोविजन था. क्या सेक्शन था उसका? 106. 106. 07, sir. No, 106 only, sir. 106 subsection 2. 106 सबसेक्शन 2 बोलता है C part. C. हाँ, कि if there is any necessity of summoning a meeting of creditors if required अच्छा, to consider the repayment plan. तो 106 to C. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ क्या बोल रहा है, the bankruptcy trustee shall within 21 days from the bankruptcy commencement date issue a notice for calling a meeting of the creditors to every creditor of the bankrupt as mentioned in the list. यहाँ कुछ नहीं दिया कि भाई नेसेसिटी है नहीं है, क्या है, आपको कॉल करनी है. The notice issued under subsection 1 shall state the date of the meeting, which shall not be later than 21 days from the bankruptcy commencement date. Be accompanied with forms for proxy voting. Specify the form and voting in which the proxy voting may take place. The proxy voting, including electronic proxy voting, shall take place in such manner and form as may be specified. तो इसके लिए आपके पास regulations हैं. रेगुलेशन है 21 एंड 26 133 के साथ. 21 क्या है, नोटिस ऑफ मीटिंग है. ठीक है. और 26 क्या है, 26 है वोटिंग बाई प्रॉक्सी. सब सेम ही है, कुछ नहीं है चेंज. कंडक्ट ऑफ मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स. द बैंक्रप्सी ट्रस्टी शैल बी द कन्वीनर ऑफ द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स समन्ड अंडर सेक्शन 133. अब देखो कई जगह लिखा है वर्ड कन्वीनर, कई जगह लिखा है चेयरपर्सन. वो आप देख लीजिए कौन से प्रोसेस में क्या वर्ड लिखा है. पूछ सकता है, कई बार सवाल पूछ लेता है इन पे. क्योंकि अगर आप देखो, आप एक बार सीआईआरपी का सेक्शन देखते हैं. ठीक है. सीआईआरपी का कौन सा सेक्शन था इसमें, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स? 24 था मीटिंग. Meetings 24. 24 मीटिंग ऑफ क्रेडिट. 24 है ना. तो Conducted. हाँ, 24 में क्या बोलता है, वर्ड क्या use Conducted. होता है? में कन्वीन. आपका रेगुलेशन 14 में बोलता है, May convene. रेगुलेशन RP 18 ऑफ chairperson. सीआईआरपी रेगुलेशन, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में कन्वीन ए मीटिंग, है ना. और यहां बोलता है ऑल मीटिंग्स ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स शैल बी कंडक्टेड बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. ठीक है. आप सेक्शन 24 सबसेक्शन 2 देखेंगे, सेक्शन 24 सबसेक्शन 2 ऑफ, तो ये इसमें मिलता है ऑल मीटिंग्स ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स शैल बी कंडक्टेड बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. और यहाँ पर बोलता है द बैंक्रप्सी ट्रस्टी शैल बी द कन्वीनर ऑफ द मीटिंग ऑफ द. सर मैटर तो सेम ही है ना. हाँ, मतलब सेम है, बट कई बार क्या होता है वो क्वेश्चन पूछ लेता है इस पर. कुछ नहीं, सच में वो क्वेश्चन पूछता है ऐसे. वो क्वेश्चन तो रजिस्टर पर भी पूछा उसने, रजिस्टर क्लेम्स वाला. Recently when I एग्जैक्ट याद रखना. recently when I appeared on 29th, वो हाँ practical question पूछे हुए हैं. I हाँ forgot that question. वो कहते हैं practically आप कैसे, see what he is saying is कि वो there was a question, मैं भूल गया उसको, कि practically आप उसमें क्या करोगे. practically तो अगर मेरे पास एक्शन है कि मैं क्या करूँ, सबसे पहले स्टेप क्या लूंगा, वो क्या बोलता है जी, क्वेश्चन वाज लाइक, मेरे को याद आता मैं बताऊंगा सर. कोई नहीं, विल शेयर इन द ग्रुप. 29th के पेपर मैंने भी अटेम्प्ट किए थे, उसमें इतने जनरल थे ना एमसीक्यूज के ऑप्शंस
कि उसमें जनरल एंड लिटिल मोर स्पेसिफिक ऐसा था वो थोड़ा actually. ऐसा हम कर सकते हैं कि ग्रुप में उसको शेयर कर सकते हैं। ग्रुप में शेयर करेंगे ना तो वो क्या होता है, एक को देख करके दूसरे को भी याद आ जाएगा। राइट। सर केस स्टडीज डिस्कस करने वाले हैं क्या हम IRP का, वो जो आपने भेजा था? वी हैव टू डू इट आवरसेल्व्स? नहीं, बिल्कुल करेंगे, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। एक बार बैंक्रप्सी खत्म कर ले, फिर उसके बाद कर लेंगे ना। फिर तो अच्छा, अभी okay. फ्रेश स्टार्ट भी करेंगे, ये वही करेंगे, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी सब करेंगे। हाँ, Okay. आज तो बनाया ही है वो। द हम्म। बैंक्रप्सी ट्रस्टी शैल डिसाइड द कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ द। सॉरी सर, सॉरी, वो याद आ गया मेरे को क्या हाँ, क्वेश्चन बोलिए। था। बट ही सेइंग इज कि इंसॉल्वेंसी उसका, आई फॉरगॉट, आई मिस इट, मैं नोट करूंगा फिर बताता हूँ सर। कोई नहीं, आप ग्रुप में बता दीजिएगा आराम से। हाँ हाँ, हाँ जी, प्लीज। हाँ जी, एक ही और ओके। उनका पर्सनल आपको। इंसॉल्वेंसी पे क्वेश्चन था एक्चुअली उसमें। हाँ, अगर आपको याद आता है तो अभी नोट करते रहिए, हाँ, तो लिख उसने लीजिए। उसने बोला, हाँ, हाँ। वो फ्रॉडुलेंट में वो पकड़ा गया है। हम्म फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग वाज बेसिकली उसके अगेंस्ट प्रूव हो गई हैं। तो हम्म अब आप क्या करो, एक एक डायरेक्टर के अगेंस्ट प्रूव हो गई, तो अब आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप, कि आप बाकी डायरेक्टर को चेक करोगे, या कुछ ऐसे दो तीन ऑप्शन उसने दिए। या नहीं, किसी ने एक फॉर चेक से उसने पेमेंट किया, जैसा आई रिमेम्बर, उसने किसी क्राइटर को पेमेंट कर दिया पैसा आने पे। तो अब आप क्या करोगे, चेक की उसके पुराने रिकॉर्ड चेक करोगे, कि या बैंक से चेक की कॉपी मंगवाओगे। तो अब इसमें मैं क्या जवाब दूं, कि मैं बैंक से पहले चेक मंगा के देखूंगा, आपने तो स्टेटमेंट में दे दिया कि उसने ऐसा फ्रॉड किया है। अब नाउ यू आर सेइंग कि मैं बैंक से कॉपी चेक मंगा के मेरे को क्या देखना है, मैं तो बोलूंगा जी भाई साहब मैं बाकी को चेक करूंगा। बट वो अब उसमें पता नहीं उसका आंसर यस या नो, आई डोंट नो। कोई बात नहीं, ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे आराम से। हाँ जी। जी जी जी। दी बैंक्रप्सी ट्रस्टी, आप भी और स्नेह जी भी आप उसमें लिख दीजिएगा, तो विल डिस्कस इन द ग्रुप। दी बैंक्रप्सी ट्रस्टी शैल, क्योंकि उसको आप प्रॉपर्ली फ्रेम कर पाएंगे ना फिर क्वेश्चन को। हाँ। जी 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 दी जी। बैंक्रप्सी ट्रस्टी शैल डिसाइड द कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स एंड कंडक्ट द मीटिंग ओनली इफ द कोरम इज प्रेजेंट। ठीक है। अच्छा, at all times this quorum will be should be there, sir. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। But in other cases they can modify, but here I think they cannot modify the what quorum fixed by bankruptcy 33%. trustee. ये है ना Even 20 regulation committee of 22 creditors, also. it is talking of notice. Quorum. Achha, in insolvency, the committee can modify the term quorum, but here I think there is no choice. Okay. Simply bankrupt trustee will decide the quorum. This is given in regulation 23(4). The bankruptcy trustee shall ensure that the required quorum is present throughout the meeting. But 134(2) is saying it shall decide the quorum for the meeting of the creditors. Yeah, There's no fixed 33% quorum. is not mentioned over. Yeah, 33 is not mentioned. The following business shall be conducted in the meeting of the creditors in which regard a resolution may be passed. Actually, this decide the quorum, it will depend upon so many things. It will depend upon the number of creditors, it will depend upon their vote share and so many other things. So depending upon the actual situation, the bankruptcy trustee shall decide the quorum. Basically, the quorum should be how much? The quorum should be that which is sufficient to get consent to any of the proposals, to any of the resolutions. ठीक है भाई, अगर मान लीजिए कोई रेजोल्यूशन है 75% के लिए, तो 75% जब तक कोरम ही नहीं है तब तक तो हो ही नहीं सकती ना वो। तो इस तरह से वो डिसाइड करेगा। अच्छा, in any case he will fix the quorum for meeting to meeting, sir, actually. Yes. हाँ, Decide the quorum of the meeting of the creditors, not meetings of the creditors. Yes, and conduct the meeting only if the quorum is present. Yes. Okay. The following business shall be conducted in the meeting of the creditors in which regard a resolution may be passed, namely, at the establishment of a committee of creditors. Any other business that the bankruptcy trustee thinks fit to be transacted. Okay. The bankruptcy trustee shall cause the minutes of the meeting of the creditors to be recorded, signed, and retained as a part of the records of the bankruptcy process. Now the thing is whether he can share it. Suppose a member of the committee
asks him to share the recording. It is because it is saying meeting of the creditors to be recorded, but he is not obliged to share the recording. This recording is only for the purpose of the adjudicating authority or some disciplinary authority in case they want. Suppose something is challenged that, okay, this was not discussed, but he has deliberately put it in. At that time, this recording may be of help. Signed and retained as a part of the records of the bankruptcy process. The bankruptcy trustee shall not adjourn the meeting of creditors for any purpose for more than 7 days at a time. Now, voting rights of creditors, section 135. Sir, you can share the minutes, sir. Yes, he has to share the minutes. He has to He share has the to. minutes. Yes. Regulation 23, हाँ, regulations में है ना. हाँ, वो तो regulation में है. he But has to share. yes. ये आ गया ना within 48 hours. Correct, correct. But sharing of minutes does not mean sharing the recording. So minutes only he will share, but he will not share the recording. Acha, recording means this type of video or like that. Yes, 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 yes. Now, voting rights of creditors, section 135. Every creditor mentioned in the list under section 132 or his proxy shall be entitled to vote in respect of the resolutions in the meeting of the creditors in accordance with the voting share assigned to him. The resolution professional shall determine the voting share to be assigned to each creditor in the manner specified by the board. So there are regulation 24 and 25. 24 is talking of vote share. So it is in proportion to the debt owed to such creditor. Okay. The voting share of a secured creditor shall be in proportion to unsecured part of the debt, if any, if it is opted to enforce its security interest. Yes. The voting share of a secured creditor who has opted to relinquish its security interest shall be in proportion to the amount of debt relinquished. Okay. A creditor shall not be entitled to vote in respect of a debt for an unliquidated amount. The following creditors shall not be entitled to vote under this section, namely creditors who are not mentioned in the list of creditors under section 132 and those who have not been given a notice by the bankruptcy trustee. Same like insolvency. Creditors who are associates of the bankrupt. So they are not entitled to vote. Administration and distribution of estate of the bankrupt. The bankruptcy trustee shall conduct the administration and distribution of the estate of the bankrupt and provisions of chapter 5. Now we are in chapter 4. So they are talking that you go to chapter 5 for administration of the estate of the bankrupt. Okay? Regulation 27 to 36 with schedule 1 and 2. 137. 137 is saying completion of administration. So we'll read that chapter separately. But let us first complete this chapter 4, completion of administration. The bankruptcy trustee shall convene a meeting of the committee of creditors on completion of the administration and distribution of the estate of the bankrupt in accordance with the provisions of chapter 5. The bankruptcy trustee shall provide the committee of creditors with a report of the administration of the estate of the bankrupt in the meeting of the said committee. A report of the administration of the estate of the bankrupt. The committee of creditors shall approve the report submitted by the bankruptcy trustee under subsection 2 within 7 days of the receipt of the report and determine whether the bankruptcy trustee should be released under section 148. Okay. So who is approving the report? The committee of creditors within 7 days of the receipt of the report. And determine whether the bankruptcy trustee should be released under section 148. The bankruptcy trustee shall retain sufficient sums from the estate of the bankrupt to meet the expenses of convening and conducting the meeting required under this section during the administration of the estate. So there are regulations 7 to 13 for that. Okay. So these are the reports by the bankruptcy trustee: preliminary report, progress report and final report. ये सब कहाँ से ले लिया? वो लिक्विडेशन से ले लिया, लिक्विडेशन है ना? टाइमलाइंस अलग है पर सर इसमें, है? टाइमलाइंस अलग है इसमें। हाँ, इसमें ये एक तो क्वार्टरली रिपोर्ट नहीं है कुछ भी, है ना? एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है और फाइनल रिपोर्ट है।
प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है विदिन 90 days ऑफ द बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में ये चीजें आएंगी। फिर आपका अर्ली कंप्लीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। प्रोग्रेस रिपोर्ट्स है विदिन 15 days आफ्टर द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है, Same provision almost. उसके बाद ये हो गया। 138 बोलता है डिस्चार्ज ऑर्डर। द बैंक्रप्सी ट्रस्टी shall apply to the adjudicating authority for a discharge order on the expiry of 1 year from the bankruptcy commencement date or within 7 days of the approval of the committee of creditors of the completion of administration। ठीक है, where such approval is obtained prior to the period mentioned in clause। ठीक है, या तो 1 year या फिर अगर पहले हो जाए तो पहले। The adjudicating authority shall pass a discharge order on an application by the bankruptcy trustee। A copy of the discharge order shall be provided to the board for the purpose of recording and entry। 138 effect of discharge। The discharge order shall release the bankrupt from all the bankruptcy debt। ठीक है, अब यहां पर बात क्या करने लगा, वो बैंक्रप्सी डेट की बात करने लगा। ठीक है, सारे डेट से डिस्चार्ज नहीं हुआ, वो सिर्फ बैंक्रप्सी डेट से। अब बात यह है कि बैंक्रप्सी डेट भी कहीं डिफाइंड है क्या? Bankruptcy debt is defined. It is in 5, sir, 17 and 5. 17.5. No. Bankruptcy due Bankruptcy debt in and relation to bankrupt means bankrupt means, yes. any debt owed by him, any debt for which he may become liable, any interest which is part of debt under section 171. Defined, bankruptcy debt defined. Any debt owed by him as on the bankruptcy commencement date. Any debt for which he may become liable after the bankruptcy commencement date but before his discharge by reason of, and any interest which is a part of the debt। Debt. So basically तो बैंक्रप्सी डेट के अंदर तो सारे डेट आ गए फिर, Yeah, All आ गए sir, all आ है गए, ना? yes, हाँ, क्योंकि एनी डेट लिख दिया इसने। yes. आप एक्सक्लूडेड डेट की भी देख लेते हैं। एक्सक्लूडेड डेट में क्या है? excluded debt, they have नहीं, एक्सक्लूडेड डेट से वो डिस्चार्ज होगा नहीं होगा, बात ही है no, ना। not he not discharged, sir. वो Excluded तो excluded है, वो तो It is excluded तो there, excluded it है is sir। there in हाँ, next एक्सक्लूडेड B. एक्सक्लूडेड इसमें नहीं आएगी वो, चाहे उसमें नहीं आएगा। डिस्चार्ज ऑर्डर इशू हो जाए उसके बाद भी जो है, provided that the discharge shall not affect the functions of the bankruptcy, affect the operations of the provisions of chapter 4 and 5 of part 3। ये 4 and 5 of part 3 release the bankrupt from any debt incurred by means of fraud or breach of trust। ठीक है, अगर ये फ्रॉड या ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट प्रूव हो जाता है तो उससे नहीं होगा डिस्चार्ज। ठीक है, डिस्चार्ज द बैंकरप्ट फ्रॉम एनी एक्सक्लूडेड डेट, एक्सक्लूडेड डेट से भी नहीं डिस्चार्ज होगा। ठीक है ना, तो ये वाले डेट बाकी रह जाएंगे डिस्चार्ज ऑर्डर इशू होने के बाद भी। एक्सक्लूडेड डेट उसको देने हैं, अगर कोई फ्रॉड से ले रखा वो देना है। ठीक है, ये है। और डिस्चार्ज ऑर्डर के बाद भी क्या हो रहा है, ये जो है इट शैल नॉट अफेक्ट द फंक्शंस ऑफ द बैंक्रप्सी ट्रस्टी। बैंक्रप्सी ट्रस्टी कब रिलीज हो रहा है? बैंक्रप्सी ट्रस्टी ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स। जो क्रेडिटर्स ने मीटिंग की ना उनके, उसमें वो स्पेसिफिकली बताएंगे वेदर इट शुड बी डिस्चार्ज और नॉट। तो ये जो डिस्चार्ज ऑर्डर है इट शैल रिलीज द बैंक्रप्ट बट इट शैल नॉट रिलीज द बैंक्रप्सी ट्रस्टी। बैंक्रप्सी ट्रस्टी जो है वो अलग है, उसके लिए सेक्शन 148. हाँ वो 137 है। 137 में बोला ना, द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स शैल अप्रूव द रिपोर्ट। और आगे फिर आएगा 139 140 क्या बोलता है? डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ बैंकरप्ट। द बैंकरप्ट शैल फ्रॉम द बैंकरप्सी कमेंसमेंट डेट बी सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड इन दिस सेक्शन। ठीक है, in addition to any disqualification under any law, a bankrupt shall be disqualified from being appointed or acting as a trustee or representative in respect of any trust, estate or settlement। ठीक है, being appointed or acting as public servant, public servant नहीं हो सकता। ठीक है,
बीइंग इलेक्टेड टू एनी, और पब्लिक सर्वेंट के लिए डेफिनेशन आपको कहां देखनी है, सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। ठीक, बीइंग इलेक्टेड टू एनी पब्लिक ऑफिस वेयर द अपॉइंटमेंट ऑफ सच ऑफिस इज बाय इलेक्शन, तो आजकल जैसे इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता वो। ठीक है, एंड बीइंग इलेक्टेड और सिटिंग और वोटिंग एज ए मेंबर ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी। Any disqualification to which a bankrupt may be subject under this section shall cease to have effect if the bankruptcy order against him is modified or recalled under section 142 or he is discharged under section 138। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये डिस्क्वालिफिकेशन कब ऑपरेट करती है, फ्रॉम बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट टिल द डेट ऑफ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज हो गया एक बारी, फिर ही इज गुड एज ऑर्डिनरी पर्सन। ठीक है, now restrictions on bankrupt, so these are two sections। 140 बोलता है disqualifications of bankrupt। Disqualifications are basically related to appointment either as trustee or as public servant or in public office or any local authority। ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन को आप समझिए अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। ठीक है, और रिस्ट्रिक्शंस क्या है, रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन एक्शंस और ऑन मूवमेंट। ए bankrupt from the bankruptcy commencement date shall not act as director of any company। ठीक है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेक पार्ट इन और बी कंसर्न इन द प्रमोशन फॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द बैंक्रप्सी ट्रस्टी, बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम क्रिएटिंग एनी चार्ज ऑन हिज एस्टेट और टेकिंग एनी फर्दर डेट। ठीक है, तो वेदर द क्वेश्चन इज वेदर ही कैन क्रिएट एनी चार्ज ऑन हिज एस्टेट और ही कैन टेक एनी फर्दर डेट, द आंसर इज यस, but he has to obtain the previous sanction of the bankruptcy trustee, so it is in the nature of interim finance। ठीक है ना, तो इंटरिम फाइनेंस की नेचर का हो तो वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो जो है ये रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट भी दे रखी है, बैंक्रप्सी कॉस्ट भी डिफाइंड है जी। हाँ, तो उसके अंदर वो इंटरिम फाइनेंस की बात करते हैं। आप दोबारा सेक्शन 179 देख लीजिए, तो 179 में है या कहीं और देख लेते हैं। नहीं है सर, उसमें इंसॉल्वेंसी में भी है, इसमें भी है। तो हो गया। अच्छा, be required to inform his business partners that is undergoing a bankruptcy process prior to entering into any financial or commercial transaction of such value। ठीक है, वो 1 लाख की आपकी ट्रांजेक्शन। without the previous sanction be incompetent to maintain any legal action or proceeding in relation to the bankruptcy debt। अब यहाँ वर्ड क्या लिखा है, be incompetent to maintain। maintain का मतलब ये है कि if he has to मेंटेन एनी लीगल एक्शन और प्रोसीडिंग, तो उसके लिए आपको प्रीवियस सैंक्शन लेनी पड़ेगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। नॉट बी परमिटेड टू ट्रेवल ओवरसीज विदाउट द परमिशन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब ये जो ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन है, ये क्या इंसॉल्वेंसी में भी है या नहीं है, या सिर्फ बैंक्रप्सी में है सर, इंसॉल्वेंसी में? इंसॉल्वेंसी में नहीं है। सर, फास्ट ट्रैक में है सर। इंसॉल्वेंसी में नहीं है सर, नहीं इंसॉल्वेंसी में नहीं है सर। इंसॉल्वेंसी में नहीं है, नहीं है, हाँ, ओके सिर्फ फ्रेश स्टार्ट में है और यहाँ पर। ओके फ्रेश स्टार्ट में। हाँ, थोड़ा ध्यान रखना है, राइट सर, राइट। क्योंकि वो उसका रीजन भी है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि हो सकता है ना भाई इंसॉल्वेंसी के बाद रीपेमेंट प्लान में पेमेंट कर दे अगला, और भाई तो पता ही नहीं ना पेमेंट करेगा नहीं करेगा। यहाँ तो प्रूव हो गया ना, यहाँ तो प्रूव हो गया कि भाई जब पेमेंट नहीं की उसने, या उसने जो रीपेमेंट प्लान दिया वो फुली नहीं हुआ, तभी तो बैंक्रप्सी ऑर्डर हुआ ना। तो बैंक्रप्सी में रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है ना। ओके, हाँ, अब आप देखो ये वाली जो ये रिस्ट्रिक्शंस है, ये तो उसमें भी नहीं है मेरे हिसाब से। ये जो इलेक्शन टू पब्लिक ऑफिस वगैरह ये है उसमें इंसॉल्वेंसी में नहीं है। इंसॉल्वेंसी में रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए ही नहीं है सर, फास्ट ट्रैक फ्रेश स्टार्ट में दिए हुए हैं। फ्रेश स्टार्ट में दी हुई है, यस। तो उसका लॉजिक वही है, any restriction to which the bankrupt may be subject under this section shall cease to have effect if the bankruptcy order against him is modified or is discharged। Now section 142 modification or recall of bankruptcy order। अब एक बार एप्लीकेशन एडमिट हो गई, ठीक है, अब उसके बाद में ये कैसे रिकॉल कैसे होगा, दी एडजुडी। अच्छा, क्या इसमें भी 90% वाला काम करेगा नहीं करेगा? इसका रीजन डिफरेंट है सर। वो विड्रॉल की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है मॉडिफिकेशन और रिकॉल। ऑर्डर बेसिकली ऑर्डर बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो क्या है, इसको रिकॉल कौन करेगा? रिकॉल भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ही करेगी।
The adjudicating authority may, on an application or suo motu, Or so motu. modify or recall a bankruptcy order, whether or not the bankrupt is discharged, if it appears to the adjudicating authority that there exists an error apparent on the face of such order, or both the bankruptcy debt and the expenses of the bankruptcy have, after the making of the bankruptcy order, either been paid for or secured to the satisfaction of the adjudicating authority. ठीक है भाई, bankruptcy order हो गया, अब उसने क्या किया, उसने बैंक गारंटी दे दी या कुछ भी दे दिया, ठीक है ना, या तो पेमेंट कर दिया या सिक्योर हो गए टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द एडजुडिकेटिंग. Where the adjudicating authority modifies or recalls the bankruptcy order under this section, any sale or other disposition of property, payment made, or other things duly done by the bankruptcy trustee shall be valid, except that the property of the bankrupt shall vest in such person as the adjudicating authority may appoint, or in default of any such appointment, revert to the bankrupt on such terms as the adjudicating authority may direct. ठीक है, हो सकता है इस बीच में कुछ एक्शन ले लिया उन्होंने बैंक्रप्सी ट्रस्टी ने, तो उस एक्शंस की बात कर रहा है कि उनका क्या फेट होगा. A copy of the order passed by the adjudicating authority shall be forwarded to the board for the purpose of recording an entry. The modification or recall of the order shall be binding on all creditors so far as it relates to any debts due to them which form a part of the bankruptcy debt. 143 बोलता है standard of conduct. So the bankruptcy trustee shall perform his functions and duties in compliance with the code of conduct. मैंने कोड ऑफ कंडक्ट पर भी आपसे ना 2 पीपीटी शेयर की थी, मटेरियल शेयर किया था ना कुछ. एक तो जो कॉन्ट्रावेंशंस हैं, कॉन्ट्रावेंशंस पे किसी मैगजीन में आर्टिकल था, वो वाला शेयर किया था मैंने. तो आई होप यू हैव गॉन थ्रू इट, नहीं तो उसको संडे को एक बार देख लीजिएगा. फीस ऑफ द बैंक्रप्सी ट्रस्टी. Regulation 4. A bankruptcy trustee appointed for conducting the bankruptcy process shall charge such fees as may be specified in proportion to the value of the estate of the bankrupt. And the fees for the conduct of the bankruptcy process shall be paid to the bankruptcy trustee from the distribution of the estate of the bankrupt in the manner provided in section 178. जैसे वहां पर है भाई, लिक्विडेटर को फीस कहां से मिलती है, लिक्विडेशन एस्टेट से. बैंक्रप्सी ट्रस्टी को फीस कहां से मिलेगी, ये एस्टेट से. नाउ रिप्लेसमेंट ऑफ बैंक्रप्सी ट्रस्टी, ये फीस के लिए रेगुलेशन 4 है आपका. तो रेगुलेशन 4 एक बार देखते हैं क्या है, कुछ है खास है क्या उसमें. ये है as a percentage of the amount realized from the estate of the bankrupt and of the amount distributed in accordance with schedule 1. तो शेड्यूल 1 में फीस दे रखी है, रेगुलेशन 1 along with शेड्यूल 1. नाउ रिप्लेसमेंट ऑफ बैंक्रप्सी ट्रस्टी, रूल 8. रूल 8 देख लेते हैं. रूल 8 क्या बोलता है. रूल 8 में बोलता है, ये रूल 8 है हमारा, कंफर्मेशन और नॉमिनेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. तो रिप्लेसमेंट के लिए एप्लीकेशन कौन लगा सकता है, वेयर द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स. ठीक है, तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने बाई वोट ऑफ 75% ऑफ द वोट शेयर वो प्रपोजल देंगे इसमें. ठीक है, जैसे इंसॉल्वेंसी में क्या था, इंसॉल्वेंसी में तो क्या था कि इंसॉल्वेंसी में तो कोई ऐसा नहीं है. इंसॉल्वेंसी में क्या पोजीशन है, कोई परसेंटेज नहीं दिया हुआ है इसमें. वहां तो डेटर या क्रेडिटर है ना, वहां है प्रोविजन. इज ऑफ द ओपिनियन, वहां डेटर या क्रेडिटर की बात कर रहा है ना. जैसे फ्रेश स्टार्ट है, फ्रेश स्टार्ट में भी तो वही है ना, डेटर और क्रेडिटर. ऐसे ही जो इंसॉल्वेंसी है, इंसॉल्वेंसी में क्या प्रोविजन है फॉर रिप्लेसमेंट, है तो सही इंसॉल्वेंसी में मेरे ख्याल डेटर या क्रेडिटर ही है. क्यों श्याम कृष्णा जी, डेटर क्राइटेरिया सर, है ना. और यहाँ पर क्या है, यहाँ डेटर या क्रेडिटर नहीं creditors है. also can change it. है जी, In that debtor, creditor, हाँ. and creditors also can change for repayment plan, implementing the repayment plan. नहीं, रिप्लेसमेंट की बात है. रिप्लेस सेक्शन 98, इफ यू सी सेक्शन 98 टॉक्स ऑफ दिस रिप्लेसमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. Yeah, हाँ, तो वहां पर क्या बात करता है, वहां डेटर या क्रेडिटर लगता है. और यहाँ पर क्या है, यहाँ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है. बेसिक बात यह है कि यहाँ सिंगल डेटर या क्रेडिटर नहीं प्रपोज कर सकता. ठीक है ना, इंसॉल्वेंसी में डेटर या क्रेडिटर प्रपोज कर सकता है. यहाँ क्या है, यहाँ कमेटी ने प्रपोज करना कमेटी का मतलब है ना, दोनों में फर्क है. और बाई वोट ऑफ 75% ऑफ द वोटिंग. वोटिंग. और ये 7 दिन के अंदर बोर्ड को लिखेंगे, बोर्ड 10 दिन में रिवर्ट करेगा, वो सारी कहानी है फिर.
और पुराने वाला जो है नए वाले को सारे रिकॉर्ड्स दे देगा। नाउ सेक्शन 146 रेजिग्नेशन भी हो सकता है, रेजिग्नेशन बाई बैंक्रप्सी ट्रस्टी। ठीक है, अब वो अपनी प्रैक्टिस ही बंद करना चाह रहा है, या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, या कोई चेंज ऑफ पर्सनल सर्कमस्टांसेस है विच प्रिक्लूड द फर्दर डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल विद इन 7 days ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ द बैंक्रप्सी ट्रस्टी डायरेक्ट द बोर्ड। ठीक है, बोर्ड 10 दिन में रिवर्ट करेगा और फिर उसको अपॉइंट कर देगा। ठीक है, नाउ वैकेंसी, वैकेंसी मतलब कोई 10th डेथ हो होती है। गई, कुछ हो गया, परमानेंट इनकेपेसिटी हो गई, पागल हो गया। ठीक है, तो उस केस पे क्या होगा, तो ये है अदर Like, देन रिप्लेसमेंट और रेजिग्नेशन द वैकेंसी। these, sorry, please. हाँ, So these provisions are given only in bankruptcy. The similar situation may be in CIRP, similar situation in liquidation, similar situation in fresh start, but they are giving here. एक्चुअली क्या है, जब जी, वहां बनाया ना उस टाइम इतना दिमाग नहीं चला, बाद में एनसीएलटी yes, के पास बहुत सारे केसेस आने लग गए। right. भाई उसमें तो ये भी है ना, एक आदमी के नहीं करना चाह रहा उसको जबरदस्ती तो नहीं है, पहले पहले तो कह सकते थे भाई आपको करनी पड़ेगी सीआईआरपी, ऐसा नहीं है कि। Yes. हाँ, पहले तो Mediation. आईपीपीआई ऑर्डर इशू कर देती है उसके केस में कि भाई तुम्हें 5 साल तक कोई नया काम ही नहीं देंगे, अगर तुम एक बार Hmm. अपॉइंट हो गए तो तुम भाग नहीं Hmm. सकते फिर वहां से। कई लोग दुखी हो जाते Now, हैं ना इनमें, ये जो प्रोविजंस हैं इनमें दुखी हो जाते हैं बंदे, क्योंकि मैनेजमेंट से कोऑपरेशन मिलता नहीं और कई चक्कर हैं इसमें। तो अब यहाँ पर इनका दिमाग खुला, बाद में 2019 में आए ना ये तो रूल्स रेगुलेशंस, वो तो yes. 2016 में चला गया, ये है। जी, नहीं 2016 में तो ये भी था ना इनिशियली कि दे बोर्ड कैन नॉमिनेट बाय देमसेल्फ, तो आपको हाँ, कंपल्सरी लेना पड़ेगा। अब तब तो कंसर्न लेने की बात हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, तो यही है, वही 7 दिन और 10 दिन, सेम चीज। और bankruptcy trustee shall give a notice of his appointment to the committee of creditors and the bankrupt within 7 days of 7 his days. appointment। ठीक है, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड दैट दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इफ द वैकेंसी हैज अकर्ड ड्यू टू टेम्परेरी इलनेस और टेम्परेरी लीव। ठीक है, तो अगर टेम्परेरी इलनेस या टेम्परेरी लीव है तो उसके लिए क्या है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। नाउ 148 रिलीज ऑफ बैंकरप्ट, मान लो उसकी कोई बाईपास सर्जरी होनी है, ठीक है ना, तो वो टेम्परेरी लीव लेगा, महीने की, 15 दिन की, जितने की भी लेना चाहे। 148 है रिलीज ऑफ बैंक्रप्सी ट्रस्टी, बैंक्रप्सी ट्रस्टी, तो रिलीज इसके लिए सेपरेट है, 148 में रिलीज का सेपरेट प्रोविजन है। डिस्चार्ज ऑर्डर से इसका मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कि डिस्चार्ज ऑर्डर हो गया तो ये बैंक्रप्सी ट्रस्टी रिलीज हो जाएगा, इसके लिए अलग से रिलीज ऑर्डर जाएगा। बैंक्रप्सी ट्रस्टी शैल बी रिलीज फ्रॉम हिज ऑफिस विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पासेस एन ऑर्डर अपॉइंटिंग ए न्यू बैंक्रप्सी ट्रस्टी इन द इवेंट ऑफ रिप्लेसमेंट, रेजिग्नेशन और ऑकरेंस ऑफ वैकेंसी, और सेक्शन 147 है द केस पे भी। ठीक है, और ये नए के साथ सारा शेयर कर दे, या अगर मान लो पूरा कंप्लीट हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, तो ही शेल बी रिलीज्ड ऑफ हिज ड्यूटीज विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूव्स द रिपोर्ट ऑफ द बैंक्रप्सी ट्रस्टी। तो ये हमारे हो गए बैंक्रप्सी से रिलेटेड रेगुलेशंस। अब हमारा आ गया चैप्टर 5। ठीक है, अब चैप्टर 5 और पढ़ लेते हैं एक बारी। No, it is also big chapter. 30 sections are there. हम्म, Duly better service will be taken separately tomorrow. किसका? This chapter. हाँ, चैप्टर 5 अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर सब लोग एग्री करते तो हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, जरा सा जी सर जी। 2 मिनट देख लेते हैं एक बार, ये जो है चैप्टर 4 आ गया।
चलो चैप्टर 5 कल आप वैसे ही करेंगे डायरेक्टली। अब एक काम करते हैं, चैप्टर 5 मोटा मोटा वैसे देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। चैप्टर 5 बेसिकली बात क्या करता है? चैप्टर 5 आपका स्टार्ट होता है फंक्शंस ऑफ द बैंक्रप्सी ट्रस्टी, सेक्शन 149 से स्टार्ट होता है। एक बार बेयर कोड देख लेते हैं। अच्छा, बेयर कोड छोड़ो, अभी आराम से देख लेंगे। तो सेक्शन 149 बात करता है फंक्शंस ऑफ द बैंक्रप्सी ट्रस्टी। अब आप ये समझिए यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एस्टेट ऑफ द बैंक्रप्ट। तो 149 बेसिकली आप समझिए जैसे लिक्विडेशन में होता है। लिक्विडेशन में वो क्या करता है? लिक्विडेशन में वो कहता है कि भाई वेदर आई वांट टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स, ऐसा बोलता है ना लिक्विडेशन में भी। तो यहां पर भी वही है कि इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ द बैंक्रप्ट एंड रियलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो ये तीन काम है उसके। ड्यूटीज ऑफ द बैंक्रप्ट टुवर्ड्स द बैंक्रप्सी ट्रस्टी, सेक्शन 150 बोलता है ड्यूटीज ऑफ द बैंक्रप्ट टुवर्ड्स द बैंक्रप्सी ट्रस्टी। वो सारी इंफॉर्मेशन वगैरह देनी है। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि उसके पास में कोई बाद में प्रॉपर्टी आ गई हो, ठीक है, आफ्टर द बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट, तो ये उसकी बात करता है। मान लीजिए बैंक्रप्सी स्टार्ट हो गई, उसके बाद में उसकी सम प्रॉपर्टी डिवॉल्व्ड ऑन हिम, तो वो सिचुएशन हो सकती है। 151 talks of the rights of the bankruptcy trustee, के he can hold the property, he can make contracts, sue and be sued, etc. 152 talks of the general powers of the bankruptcy trustee, that he can sell, he can give receipts, prove rank, etc. 153 talks of approval of the creditors for certain acts, ठीक है। like 28. Yes, like 28। इसमें जो इंपॉर्टेंट है क्या बोलता है? Except as consideration for the sale of any property, a sum of money due at a future time, subject to certain stipulations such as security। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपको कुछ पैसा मिल जाए कि भाई बाकी पैसा आपको बाद में मिलेगा, ठीक है। 153C talks of this, that he can accept as consideration for the sale of any property a sum of money due at a future time, subject to certain stipulations such as security। अब इन सब के लिए क्या है? सीओसी की जरूरत है, अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स है फॉर सर्टेन एक्ट्स, ठीक। वेस्टिंग ऑफ एस्टेट ऑफ द बैंक्रप्ट, और ये एस्टेट ऑफ द बैंक्रप्ट शैल वेस्ट इन द बैंक्रप्सी ट्रस्टी। 155 टॉक्स ऑफ द एस्टेट ऑफ द बैंक्रप्ट, जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके पास। लेकिन द एस्टेट ऑफ द बैंक्रप्ट शैल नॉट इंक्लूड एक्सक्लूडेड एसेट्स, ठीक है। एस्टेट ऑफ द बैंक्रप्ट में एक्सक्लूडेड एसेट्स नहीं आएंगे, या प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द बैंक्रप्ट ऑन ट्रस्ट फॉर एनी अदर पर्सन, ठीक है। ये बेसिकली सेक्शन 36 से मिलता जुलता है, जैसा हमारा सेक्शन 36 है ना सीआईआरपी में, तो 155 वैसा ही है। 156 talks of delivery of property and documents to the bankruptcy trustee. 157 talks of acquisition of control by the bankruptcy trustee. 158 talks of restrictions on disposition of property, ठीक है। अब इसमें दो बातें की इसने। पहला क्या बोला? एनी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी मेड बाय द डेटर ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी एंड द बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट शैल बी वॉइड, ठीक है। भाई डेटर ने एप्लीकेशन लगा दी या क्रेडिटर ने एप्लीकेशन लगा दी, अभी एडमिट नहीं हुई है, और उस पीरियड में कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, तो उसका क्या होगा? दैट शैल बी वॉइड, ठीक है। फिर अच्छा, बिफोर दैट ही कैन डिस्पोज सर, है बिफोर दैट ही कैन डिस्पोज। हाँ बिफोर तो कर ही सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। That anyway proof A transactions will come this in this also. बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, हाँ वो तो हम आगे पढ़ेंगे। आगे आगे आएंगे सर अभी सारे। 159 टॉक्स ऑफ आफ्टर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द बैंक्रप्ट, कि आफ्टर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का क्या होगा। 160 टॉक्स ऑफ ओनरस प्रॉपर्टी ऑफ, and 161 नोटिस टू डिस्क्लेम, डिस्क्लेमर ऑफ लीज होल्ड्स, चैलेंज, अंडरवैल्यूड ट्रांजैक्शंस आ गया आपका 164 में। 165 प्रेफरेंस ट्रांजैक्शंस आ गया। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि वहां 2 years है और
1 ईयर है, यहाँ पर 6 मंथ्स की बात करता है। प्रेफरेंस ट्रांजैक्शन में, यस। और ये एवरीथिंग भी इज है सेम। कि अगर आपने बैंकरप्ट और एसोसिएट के बीच में कोई ट्रांजैक्शन किया तो वो दैट शैल बी डीम्ड टू बी एन अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन। उसमें कोई फिर गुड फेथ वैल्यू कंसिडरेशन की बात नहीं है। 164(3) talks of this, that a transaction between a bankrupt and his associate entered into during the period of 2 years preceding the date of making of the application for bankruptcy shall be deemed to be an undervalued transaction। उसमें डीमिंग फिक्शन लग जाएगा। टीम जो थे। तो ये काफी डिटेल में है, इसको हम कल ही करेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चैप्टर 5 हम कल करेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद में आप देख लो, अगर संडे को भी क्लास कर सकते हो तो संडे को हम केस स्टडीज कर सकते हैं, या जैसा नहीं होगा तो फिर मंडे को करेंगे, जैसा ग्रुप में लिख दीजिएगा। बट ये है कि पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वट एवर मटेरियल आई हैव शेयर्ड प्लीज गो थ्रू दैट मटेरियल, वो जरूरी है बहुत, है कि नहीं? क्योंकि देखो सारी केस स्टडीज डिस्कस करना यहाँ मुश्किल हो जाता है, या तो हम ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, है ना, कुछ यहाँ डिस्कस कर लेंगे, बाकी ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। Whatever you feel important सर, आपको because you have been taking regularly, हाँ तो जी, हाँ जी, वो यहाँ पे कर लेंगे and rest we can discuss हाँ over it। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आज भी वाली जो केस स्टडी है ना, ट्राई टू गिव इट आंसर्स इन द ग्रुप, ग्रुप में भी आप आंसर दे सकते हो, है कि नहीं? ओके। उससे जी क्या जी होगा, सब कम से कम पढ़ तो लेंगे ना थोड़ा सा उसको। जी जी। ओके जी, गुड नाइट।